Hello students, how are you? Hope so you are well and safe at home. So today, 2nd of September, day Wednesday, for the class 12 we have the new topic for alcohol phenol ether, that is chemical properties of alcohol. If we start the chemical properties of alcohol, we can say alcohols have tendency to show a versatile nature. What is the meaning of the versatile nature? Versatile nature means it have tendency to show electrophilic nature and nucleophilic nature also. In case of the alcohols, a number of compounds of alcohols have the tendency to show as a electrophile, and in number of compounds they have tendency to show as a nucleophile. And some of the compounds are those behaves both in the nature as a versatile compound, electrophilic and nucleophilic reagent also. If we see this compound and if the alcohol, if the elimination of H will be takes place, if this H will be eliminated from the alcohols, or we can say this H will be eliminated from the oxygen side, then it will be behaves as a nucleophile, because the oxygen contains the negative charge after the removal of the hydrogen. So in this case, when alcohols eliminate hydrogen, clear? So it forms RO negative. This is known as the alkoxide ion. So this alkoxide ion behaves as a nucleophile. Okay. So this nucleophile will be attacked on any of the electrophilic compounds. In the second way, if OH will be eliminated from the R, in this case, when alcohol eliminate the complete portion of O bond H, means O and carbon, oxygen and carbon under those cleavage, then the both electron will be transferred toward oxygen, and in this case the carbon contain the positive charge. In this case, the carbon contain positive charge. It means now the compound behaves as a electrophile. So in this case, we can say alcohols have the tendency to react as a electrophile or as well as nucleophile. Other than these two types of properties, it has the miscellaneous properties also. Clear? Just like oxygen oxidation, okay, and the oxidation that takes place on CS2OH group, that is on, or simply can say it is the iodoform test. Okay, so now we start the first chemical property. Acidic character of alcohol and phenol. So in this case, acidic character of alcohol and phenol, we will study about both the cases, alcohol and as well as phenols. So any of the alcohol have tendency to react with metals. Any one of the alcohol have the tendency to eliminate hydrogen, and this hydrogen, so alcohols when react with sodium, it forms hydrogen gas and sodium alkoxide. So alcohols when react with sodium, it will form the two products. It will form two products. One product is sodium alkoxide, means this positive will be attacked on RO negative, clear, and the evolution of hydrogen gas will be takes place. It means all alcohol have the tendency to react with the metals, but not with all types of metals. It have the tendency to react only those metals which have less E standard values, clear, or simply we can say the highly reactive metals, means highly reactive metals have the tendency to react with alcohols just like sodium, potassium, aluminium, magnesium, calcium. These all elements have the
with alcohols and form hydrogen gas. In the same way, phenol have also tendency. Phenol, that is benzene with OH, when reacted with sodium or any other active metals, it will form sodium phenoxide. Benzene with O negative is known as phenoxide ion. So this compound is known as sodium phenoxide. Okay, so this is the sodium phenoxide. The sodium phenoxide will be formed when phenols react with the sodium. It will dilute hydrogen gas with sodium phenoxide. Now, there is a difference between alcohol and phenols. Phenols have the tendency to react with the alkalis. They can react with the NaOH, they can react with potassium hydroxide, they can react with the calcium hydroxide, but alcohols have no tendency to react with any of the alkalis. Means alcohols do not react with NaOH, KOH or any other of the alkalis. So when alcohol, any of the alcohol react with the sodium hydroxide or any of the alkalis, it will be converted into none of the product, means there will be no reaction. But phenols, when react with NaOH or any other of the alkalis, it will form that type of metal with the phenoxide ion, like that sodium phenoxide with water. Okay, so this behaves as an acid, this behaves as a base and forms salt and water. So from this equation we can say that phenols are more acidic compared to alcohols. Clear? Again I repeat, which one is the more acidic in nature, alcohol or phenols? So phenols are more acidic compared to alcohols. And how can we solve this problem? When phenols react with any of the alkalis, it will form the peroxide ion, but alcohols do not react with this type of reaction. Clear? Now we start the next one. So, see this equation. This is the alkoxide ion, water molecule, alcohol, and the hydroxide ion. Alcohols are acidic in nature, okay, but these are so weak that if we compare with water molecules or the water is more acidic compared to alcohol, और we know that water is neutral in nature. अब आप समझ सकते हैं कि अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर कितना लो होगा. मीन्स वाटर एक न्यूट्रल नेचर को शो करता है, और वाटर से भी लेस एसिडिक कौन होता है? अल्कोहल्स. मीन्स वाटर में HIN को लूज करने की टेंडेंसी अल्कोहल्स की कंपेयर में ज़्यादा होती है, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द क्लास 11 those compound which have tendency to lose the hydrogen ion when dissolved in water, they are known as acids. So see here, this is the water molecule. When water molecule is react with any of the alkoxide compound, that will be sodium alkoxide,
that may be of the potassium alkoxide. So when water is react with any of the alkoxide compound, it convert into alcohol and hydroxide ion. So see here, this water have more tendency to lose the hydrogen ion, and RO negative have more tendency to accept the H ion. Means this behaves as a this behaves as a pronostate acid, and this behaves as a pronostate base, and RO negative convert into ROH, clear, and the water convert into OH negative. This reaction shows two important information. First information, water is more acidic compared to this alcohol. अगर ऐसा नहीं होता तो ये H कभी अल्कोहल के साथ नहीं होता कि अल्कोहल क्या सब अल्कोहल के पास क्या है H. इस पूरे सॉल्यूशन में RO के पास में H प्रेजेंट है. अगर वो वाटर से ट्रीट करें मतलब इसकी H देने की कैपेसिटी इससे ज़्यादा है. सेकेंड थिंग, दिस इक्वेशन शोज दैट एल्कोक्साइड आयन इज मोर एसिडिक कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन. सी हियर, ये एल्कोक्साइड आयन किससे रिएक्ट कर रहे हैं? एल्कोहल से. क्लियर. एल्कोहल वीक एसिड है. वीक एसिड से बना हुआ पार्ट क्या है? RO. वीक एसिड से बना हुआ पार्ट क्या है? OH नेगेटिव. एल्कोक्साइड आयन क्या है? एल्कोक्साइड आयन एक बेसिक नेचर शो करे और इससे बना हुआ एल्कोहल क्या होगा? वीक एल्कोहल होगा. इसका मीनिंग ये है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा है? H को एक्सेप्ट कर रहा है. H को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है. तो H को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा बेटर है? एल्कोक्साइड आयन की. अगर OH आयन की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती तो ये OH आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता? वाटर की फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव नहीं होता किसके कंपेयर में? एल्कोक्साइड के कंपेयर में. क्लियर. तो इस एल्कोक्साइड आयन ने अपने आप को तो कन्वर्ट एल्कोहल में कर लिया, H आयन को गेन कर लिया, लेकिन ये OH आयन क्या है? ये OH आयन अगर एल्कोक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होता तो ये अपने अंदर क्या एक्सेप्ट कर लेता? H आयन. क्लियर. तो ये तो आयंस में रह गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, बाय द गेनिंग ऑफ H आयन. इट मीन्स दिस base is more strong compared to OH ion. So this is the question, how can you prove that alkoxide ion is more basic compared to hydroxide ion? So you can write this equation and explain this. Okay, so this is the part of the acidic character. Now the question arises, if we have the number of alcohols, so how can you define which one is a more acidic in alcohol? So there are three different alcohols: methanol, isopropyl alcohol, and tertiary butyl alcohols. Methanol represent to primary alcohol, this represent to the secondary, and this one represent to tertiary alcohol. In this case, OH is attached on that carbon where number of carbons are 3, means there will be no hydrogen. Clear? There is a lacking of hydrogen. So we can say, according to the plus I effect, means inductive effect, inductive effect, we very well known, have the tendency to shift the electron in carbon chain. So this group, this methyl, this one methyl group, and this one methyl group, all methyl have the tendency to donate the electrons towards this carbon atom, and carbon atom shift this electron towards oxygen atom. Clear? In this case, only two alkyl groups are present, means nature of donation of the electrons is less compared to the tertiary conditions. In case of the secondary or the primary, only one alkyl group will present that have tendency to donate the electron towards oxygen atom. It means more and more electron will be shifted or the transferred in case of the tertiary condition on the oxygen atom. If oxygen have more electron density, because as the electron will be high on oxygen atom, it means oxygen have the more tendency to accept the electrons, or simply we can say they have less tendency to lose the hydrogen.
as a hydrogen ion form. So if electron density on oxygen is high, so oxygen have less tendency to lose hydrogen in the form of the hydrogen ion. Clear? It means this compound is very weak in nature, but in the primary condition, that is CH3OH, which have only one alkyl group, means there is a less inductive effect. It shows electron density on the oxygen atom is less and the removal of hydrogen will be easy. So there is a plus I effect. Plus I effect always represent to donation of electrons, clear, to the carbon atoms by carbon chain. So this is the trend. So this is the most acidic in nature in these three, and this is the least nature because of plus I effect continuously increases. So simply we can say in the tertiary conditions, plus I effect is more compared to the secondary, and secondary is more compared to the primary condition. That's why the primary alcohols are high acidic in nature, and tertiary alcohols shows the least acidic in nature. Okay. So this is the trend of acidic nature. This is the decreasing trend of acidic nature. Clear? Now we can say, or we can define the different types of alcohols. Now the second question, which one is more acidic in nature, alcohol or phenol? So we have already find out, but why? What is the reason why phenols are more acidic than alcohols? We very well know that phenols are more acidic because they have tendency to react with NaOH and have the tendency to form salt and water, but alcohols do not show this type of reaction. But what is the reason behind that? Clear? So question is that why phenols are more acidic than alcohols? Simply we can say those compounds are more acidic which have more tendency to lose hydrogen in the form of hydrogen ion easily. Now, in case of the phenol, oxygen have a lone pair, clear, and these lone pair are shifted in this benzene ring for resonance. That's why the bond between C and O, this C and this O have the partially double bond character. Cl. This is the first resonance of the phenol. This carbon that contain the OH group in case of the phenol have sp2 hybridization. It shows sp2 hybridization because there are 3 sigma bond 1, 2 and 3. That's why it shows sp2 hybridization. In case of alcohols, because of the 4 sigma bonds, this carbon represent to sp3 hybridization, and we very well know about that sp2 hybridized carbon is more electronegative compared to sp3 hybridized carbon atom. Number one. Second thing, sp2 carbon, this is the sp2 carbon. If it is more electronegative compared to that, it means have more tendency to shift the electron toward itself. जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे वो भी कहाँ शिफ्ट होंगे थोड़े से, अगर अभी हम तक मान लेते कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, वो दोनों के केस में हाई है. इसके केस में भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसके केस में भी हाई है,
लेकिन कार्बन इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू दैट वन। तो जो शेयरिंग के भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कहाँ शिफ्ट होंगे, थोड़े से टूवर्ड्स ऑक्सीजन से कार्बन की साइड, मतलब सेंटर से पहले ही वो कहाँ थे, ऑक्सीजन की साइड। लेकिन अब सेंटर से ऑक्सीजन की साइड बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन थोड़ा सा उसको अपनी साइड क्या करेगा, अप्रोच करके रखेगा, ये कैच करके रखेगा, नंबर वन। सेकंड थिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बेंजीन रिंग, दिस लोन पेयर इज इजिली participate in this resonance. That's why it shows the partial double bond character, and this oxygen contains the positive charge. That's why the polarity between O and H, due to the presence of this double bond character and this positive charge, this oxygen and this hydrogen have to show more dipole moment. Clear? That's why the removal of hydrogen will be easy. But in case of the alcohols, if we see, the lone pairs is also present on the oxygen atom, but these lone pairs are not participate in any of the ring or any of the resonance. It means these lone pairs are only these lone pairs are only localized. These electrons are only localized, and in this case these electrons are delocalized. It means there will be no partial double bond character, there will be no positive charge. Clear? It means in between O and H, dipole moment is less compared to this one, or simply we can say the polarity is less in alcohols in between O and H compared to phenol O and H group. जितनी ज़्यादा पोलरिटी होगी उतना ही ज़्यादा H का रिमूवल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज इजी इन केस ऑफ फिनॉल कंपेयर टू इन केस ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर? तो फिनॉल के केस में जो H प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होता है, O और H के बीच की पोलरिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर्स का पार्टिसिपेशन बेंजीन की रिंग में हो जाता है और ऑक्सीजन पे कैरी हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन को आसानी से क्या करेगा, लूज करेगा और इंस्टेंटली लूज करेगा। बट इन केस ऑफ एल्कोहल्स में ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो लोकलाइज्ड है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं हो रहा, एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है डोर से जो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। यहाँ पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो -r को शो करने वाला है, माइनस रेजोनेंस को शो करने वाला है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी और वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन को आसानी से लूज करेगा। दैट्स व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल्स। सो दिस इज द पार्ट ऑफ बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एसिडिक कैरेक्टर इज, if we see the compare between phenol or the phenoxide ion. After the removal of H or after the removal of any of the positive part, this phenol converted into phenoxide ion, and after the removal of H from alcohol shows alkoxide ion. That is second reason. Clear? Why phenols are more acidic compared to alcohols. After the removal of H, ये जो नेगेटिव चार्ज कैरी हो रहा है ये लोकलाइज्ड है। क्लियर? और ये नेगेटिव चार्ज इस पे कैरी रहेगा और इसका मतलब इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होने में एक टाइम लगेगा, क्योंकि इसके पास कोई भी न्यूट्रल करने के लिए कोई मॉलिक्यूल नहीं है। पीछे से जो एल्काइल प्रेजेंट है वो भी इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली डोनेट करता रहेगा, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। बट इन केस ऑफ द फिनॉक्साइड आयन, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट किसमें कर जाएगा, रेजोनेंस में, तो ऑक्सीजन की नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी और ये अपने आप को स्टेबल करना स्टार्ट कर रहा है। कौन? फिनॉक्साइड आयन। दैट्स व्हाई फिनॉक्साइड आयन इज अ मोर स्टेबल कंपेयर टू एल्कोक्साइड। इसका मतलब फिनॉल अगर फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो भी जाता है H को रिमूव करने के बाद में, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकता है, जबकि एल्कोहल्स अगर H को लूज भी कर देगा तो जो एल्कोक्साइड आयन बन रहा है तो एल्कोक्साइड अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। क्लियर? सो दिस इज द रीजन कि एल्कोहल्स लेस एसिडिक क्यों होते हैं और फिनॉल्स ज़्यादा एसिडिक क्यों होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पे। सेकंड ये कि दिस इज द फिनॉल, सॉरी फिनॉक्साइड आयन, एंड दिस इज द फिनॉल।
In phenol or the phenoxide ion, which one is more stable? That is a new question. In phenoxide ion or the phenol, in between these two, phenoxide and the phenol, which one is more stable? If we see the resonance of the phenol, or if we see the resonance of the phenoxide ion, in case of the phenol, there are one positive or one negative continuously on the benzene ring and the oxygen atom. See. एज यूजुअल बाकी रेजोनेंस ड्रॉ होती जाएंगी. क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. वी ऑलरेडी डन दिस टॉपिक. क्लियर? इफ वी टेक द रेजोनेंस ऑफ द फेनॉक्साइड आयन, now we can easily see that in case of the phenol, when we draw the resonating structures, all resonating structures represent the positive and negative charge. Means there is a charge separation. There is negative charge and positive charge. There are two charges. But in case of the phenoxide, and only negative charge is carried on the benzene ring. It means there is a charge separation and there is a no charge separation. And for the charge separation, more energy is required to neutralize the compound. अगर वहाँ चार्ज सेपरेशन है और वो कंपेयर कर रहे हैं विदाउट चार्ज सेपरेशन किसी कंपाउंड से, तो चार्ज सेपरेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी. और अगर ज़्यादा एनर्जी की नीड है तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है कम. ये हमेशा बात की है मैंने. अगर किसी भी कंपाउंड को एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो वो स्टेबलाइज कम होगा. फिनॉक्साइड आयन को चार्ज सेपरेशन नहीं होने की वजह से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है. और यहाँ चार्ज सेपरेशन होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रलाइज होने के लिए. इसका मतलब इसमें स्टेबलाइजेशन लो होगा. सो दिस इज द टॉपिक ऑफ फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन. सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल. क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alcohols. Thank you.